But those who are new to the family, let me just brief about it to all of you. We are a technology and knowledge platform. We in our journey have always tried to make your GST compliances seamless and hassle-free. It has been engineered for your empowerment and benefit. Optotax is India's #1 and biggest GST platform. We have now become a family of 60,000 plus tax professionals who trust Optotax for their 1 million plus clients. So you can also give it a try. And now is the time to introduce today's topic, where we simplify income tax compliances of charitable institutions. It is simplifying income tax on certain transactions. And our guest of honor for today's webinar is CA Dr. Raj Chawla ji. Though he is a well-known personality already in CA profession, but still it will be my honor if I get this opportunity to introduce him before all of you in today's session. He's a partner at RCA & Company, LLP, Chartered Accountants. He is currently serving as a member of Central Council of ICAI and has been past chairman of NIRC of ICAI 2015 and 16. And also, he has been president of Rotary Club Delhi, Vivek, for 2018 and 19, and president of Krishna Sant Foundation, NGO. And his qualification credentials are really unmatchable. With being a chartered accountant, he also is a company secretary, LLB, MIMA, DISA, MICA, and ASA Australia. So it's our utmost pleasure to have such a knowledgeable personality like you with us today. And you have set a benchmark that there's no end to learning and education. So we are really glad that we got this opportunity to share this virtual stage with you. So it will be really great if you can enlighten us with any of your words of wisdom. So over to you, Raj sir. Thank you, Rohit. Good evening to all of you. First of all, I am thankful to Optotax for giving me this opportunity to interact all of you. I am also thankful to CA Sunil Garg, my friend, speaker for today webinar. Thank you, Sunil ji, because everyone is crazy to hear you, because you have so much knowledge on this charitable trust that everyone wants to hear from you, because there are new provisions in this charitable trust. Earlier, the practice was very simple, but now it is very technical. So we have to learn from you every nitty and gritty of this subject. So with this, I am thankful to Optotax for giving me this opportunity. Thank you, Rohit. Thank you so much for your kind words, Raj sir. It was really a pleasure. And now, moving on, I'd like to introduce our faculty for today, CA Sunil Garg ji. CA Sunil Garg ji is a qualified chartered accountant since May 1992 with first division. He has been practicing in taxation, auditing, advisory services, risk management, cross-border transaction, international taxation, and management services since last 29 years. He is a founding partner of Sunil Suresh and Associates. The firm also has its overseas association in many countries. Mr. Garg is a renowned speaker and writer on various issues related to taxation. He presents his views on various national news channels, including Zee Business, the Rajya Sabha TV, NewsX, CNBC Awas, News 18, and Zee News. Mr. Garg is regularly participating in a tax special show known as Money Guru on Zee Business News channel for last many years. As tax expert, he has been presenting with more than 500 webinars, seminars, tech shows on various issues. Mr. Garg is associated with various industrial and professional bodies as well, like PhD, Chamber of Commerce and Industry, Faridabad Chambers of Commerce and Industry, w.r.t, etc. He is also a member of governing body of many educational and social bodies. Adding to his prominence, he serves as a president for Rotary Club of Faridabad, Grace, in 2019 and 20, rendering his duties towards society. He also engages in promoting an NGO which actively works indeed for welfare, education, and upliftment of poor and economically backward children and their families. So first of all, it's our great pleasure to have such a charismatic and dynamic personality like you with us today, sir. Your knowledge and experience are really unbeatable. I and our viewers are really looking forward to hear from you, as you are such an experienced speaker, not only on today's topic, but also your experience, how have been your journey and everything. And
also your multi-dimensional and profound nature. So I don't think I should take much more time of our participants, because they have been eagerly waiting and joined just for your kind deliberation. So I'll just hand it over to you. So over to you, sir. Thank you, Rohitji, for the nice words of introduction. And it's my privilege and honor to be on this renowned platform. And it's always been a pleasure to interact with your professional colleagues. I also thank my friend, my partner, Dr. C.A. Raj Chawla ji. Friends, as you know, I and Raj have done our CA together in May 1992 attempt. And since then, we are associated with each other. And as narrated by Rohit ji, I don't think he has left any degree in education world of accountancy and management, which he has not achieved. And recently he became doctorate, he done his doctorate, and then Australian CPA. See how dedicated he is towards his profession. At the age of 53, now he is also studying. Thank you, Raji, for being with us and for your nice words of wisdom. So friends, this area of charitable trust. You know, friends, in 2015, there was a report from CAG of India. And when it was suggested that a lot of money is being rotated through the charitable trust, and as per one estimate, around 4 to 5 lakh crores of rupees are being rotated or being spent through the charitable trust. And there were so many anomalies, there were so many gray areas in the working of charitable trust. And since then, since the budget of 2016, you might see that a lot of changes are being proposed systematically in the assessment and taxation of charitable trust. And in this Finance Act of 2022, if you have read this memorandum to the finance bill, almost 25 pages has been dedicated towards the explanation, towards overhauling of the assessment and taxation of the charitable trust. See how much important topic this charitable trust or the institutions is in the eye of the government. Now, in today's webinar, what I am going to do, first of all, we will have an overview of the assessment and taxation of charitable trust, section 11, 12, 13, and 1023C. How the exemption has to be taken, what forms are to be filled, and then I will come to the recent amendment by Finance Act 2021 and Finance Act 2022. So this is the scheme for today's webinar. Now, friends, what is a charitable institution? How many kinds of charitable institutions is there? And whenever I will say charitable trust, it will always include a society, a charitable society, or Section 8 company, and popularly known as NGO or NPO. So I will share my screen, Rohit ji, for better understanding of the subject. Yes, sir. And Rohit ji, you please be on the screen so that it can Okay, be sir. an interactive session, okay? Sure, sir, sure. And whenever you think we can take up the questions, but please ensure that questions should be related to that part which we have covered that time. I will stop for a moment after completing a topic, and then we will move forward and we will take the questions. Okay. So before coming to the amendment proposed by Finance Act 21 and Finance Act 2022, now let us understand what is the meaning and types of the NGO, how they are incorporated, how they are registered, and what is the difference between a society, a charitable trust, or Section 8 company. This is the basic questions. Whenever we start the practice of these charitable institutions, so this is the basic questions being asked. What is the difference
between a charitable trust, a society, and Section 8 company. These three acts are the governing acts for these NGOs. And first one is the Indian Trust Act 1882. And friends, basically this act is for the private trust. Now, what is the difference between the private trust and a charitable trust? This is another question. एक सवाल ये भी उठता है कि प्राइवेट ट्रस्ट में और चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या फर्क है और ट्रस्ट होता क्या है? Indian Trust Act 1882 defines trust as an obligation cast upon the trustees to do an act as mandated by the author or the settler or the founder of the trust. So for a trust, for a valid trust, three components are very essential. Three parties are there. One is settler, we can say it a founder or author of the trust. Second is trustees, to whom an obligation has been cast upon. And third is the beneficiary. And the difference between the private trust and a charitable trust is, in private trust, the beneficiary are decided in advance. Who is the beneficiary? And in charitable trust, beneficiary are general public. General public जहाँ beneficiary होगी वो charitable trust होगी. And charitable trusts are being registered generally with the registrar in states, but it has the area of operation throughout India. Only 3 states, Karnataka, Maharashtra, and Rajasthan, they have a separate charity commissioners, or in Rajasthan it is called 𝐓𝐚𝐿 Trust. When you have to get a registration, again with those charity commissioner or 𝐓𝐚𝐿 Trust or whatever name it is there. But throughout India, it is being registered under the Indian Trust Act with the registrar. Simple formation. And what is written in the trust deed? Please understand. जो ट्रस्ट डीड में लिख दिया सेटलर ने, that is the Gita and Bible of that trust. Unless a specific power has been given to the trustee to amend that trust deed, you cannot change, you cannot amend. But the object and the bylaws of the trust should not be the violative of any law of the land. बड़ा वाइड एरिया है, बहुत ज्यादा लिबर्टी है सेटलर के पास में. वो जो लिख के जाएगा, जो कंडीशंस ट्रस्ट की होंगी, ट्रस्ट को वही फॉलो करना है. एंड द ट्रस्टी कैन बी अ लाइफ टाइम ट्रस्टी एंड सेटलर कैन आल्सो बी अ ट्रस्टी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैन सेटलर बी अ बेनिफिशियरी आल्सो? देखिए, प्राइवेट ट्रस्ट मैंने बताया था, प्राइवेट ट्रस्ट में देयर आर 2 काइंड ऑफ प्राइवेट ट्रस्ट. वन इज द स्पेसिफिक ट्रस्ट and another is discretionary trust. बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं प्रोफेशनल्स हमेशा कि प्राइवेट ट्रस्ट में डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट होता है और एक स्पेसिफिक ट्रस्ट होता है. इन स्पेसिफिक ट्रस्ट द शेयर ऑफ बेनिफिशियरी आर प्री डिसाइडेड. ट्रस्टीज डू नॉट हैव द पावर टू चेंज दैट शेयर. और सेकेंडली, इन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द ट्रस्टी टू स्पेंड दैट मनी एज पर देयर विशेस. एंड दैट इज व्हाई इन इनकम टैक्स एक्ट there are 2 different sections who govern the taxation of these private trusts. मैं छोटा सा इसको कवर कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए. प्राइवेट ट्रस्ट का टैक्सेशन होगा सर सेक्शन 161 कैपिटल ए और 164 2 में. If it is a specific trust, the tax is generally levied at slab rate, generally, unless it is doing a business. In case of a discretionary trust, the tax is levied at MMR. Unless until there are certain conditions. Take a basic difference. Now coming to charitable trust. In case of charitable trust, which is registered under Indian Trust Act, sections governing are 11, 12, and 13. But please understand, if you are not registered with section 12AA and now it is 12AB, capital AB, the benefit of section 11 is not available. To get the benefit of section 11, the entry point is registration with 12AB. एक सवाल और लोग पूछते हैं, मैं उसका जवाब बाद में दूंगा
if the trust is registered with the registrar, it is registered, it is a charitable trust, but has not got the registration with Commissioner of Income Tax under Section 12AB, then what will happen? Whether the income will be charged at slab rate or MMR. Please understand, it is an AOP and income is to be charged at slab rate only. ये लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अगर हम रजिस्टर्ड हैं, हम 12AB में नहीं है, तो हमारा जो स्लैब रेट होगा वो MMR होगा. नहीं होता जी, स्लैब रेट होगा आपका, आप स्लैब रेट पे टैक्सेबल करेंगे, MMR पर नहीं करेंगे, बिकॉज द जनरल पब्लिक इज बेनिफिशियरी. नाउ कमिंग टू सोसाइटीज. Societies are being registered under the Society Registration Act 1860, and generally it is a state matter, unless until it is a multi-state society जहाँ दिल्ली में registered होती है. It is being governed by the respective states, and the area of operation of a society is that particular state only. You cannot go beyond that state, unless until it is a multi-state society. रोहित जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? दोनों बातों का फर्क मैं समझा रहा हूं आपको. चैरिटेबल ट्रस्ट में अगर आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, throughout the country you can work, but in Societies Act you have a specific area of operation, and the model bylaws given by that particular state has to be followed. In case of trust, the bylaws are being written or is being dictated by the settler, but in society the bylaws are generally given by the respective states, and there are model bylaws by the state authorities, and the area of operation is again that particular state. And the difference, another difference is, in trust you can have lifetime trustees, but in society you have elections. And the third kind of trust or charitable organizations or institutions are Section 8 company, which are incorporated under the Companies Act 2013. And Section 8 companies are being governed by the Companies Act. So this is the basic difference between three kind of these NGOs or three kind of these charitable institutions. And trust, you can say trust, institution, society, charitable society, or Section 8 company. So basic ये difference. Now coming to the charitable trust. What Section 11 says, subject to the provisions of Section 60 to 63, income of the property held under the charitable trust will not be included in the total income if the accumulation is not more than 15%. देखिए, मैंने एक बात बताई थी आपको, and if it is for the charitable purpose or religious purpose or wholly charitable or religious purpose, तीन एलिमेंट है सर इसमें. सबसे बड़ा है subject to the provisions of Section 60 to 63. इसका मतलब क्या है? If we read Section 60 to 63, they gives us the situation, they gives us the definition of revocable transfer. और रोहित जी, इस बार जब सेक्शन फॉर्म 10A फाइल करवाया था सरकार ने, तो पूछा था whether the trust deed contains the clause of irrevocability or not. उसमें गलती हो गई सरकार से. देखिए, इरिवोकेबिलिटी का क्लोज केवल ट्रस्ट में होता है, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी में नहीं होता. लेकिन जो कॉलम दिया था उसमें कहा था यस और नो. द राइट आंसर इज देयर शुड बी 3 कॉलम, यस, नो, नॉट एप्लीकेबल. जब हम फॉर्म 10A भरते हैं तो पूछता है whether the deed contains a clause of irrevocability. And what is another relevance? Because as I said, if it is a revocable transfer, and revocable transfer means when the benefits of the asset goes back to the settler, then the provision of Section 11, the exemptions given in Section 11 will not be applicable. Operation of Section 11 will not be there if it is a revocable trust. So friends, please ensure
whenever you are writing a trust deed, there has to be a irrevocability clause. Irrevocability matlab the donation, the property which the settler is setting towards the trust, it should be an irrevocable transfer. And when we go to section 47, the transfers which are not regarded as transfers. Otherwise, तो transfer पे capital gain tax लग जाएगा. If a settler is setting a, say, immovable property, a capital asset towards the trust, then he has to pay the capital gain. But there is an exemption in section 47 also, that irrevocable transfer to a trust is not being deemed as transfer. तो वहाँ पे आपको tax लगता है. Similarly, in section 56(2), 56(2)(10), an exemption is again given. If the irrevocable transfer is there, then again it will not be income of a trust. And this is the similar case for the private trust as well as for the charitable trust. Another very important thing is about the charitable purpose. Section 11(1) says it should be for the charitable or religious purpose, either wholly charitable, wholly religious, partly charitable, or partly religious. Now, what is charitable purpose? If you do not fall in charitable purpose, again section 11 will not be applicable. And what is charitable purpose? 2 clause 15. 2 clause 15 defines charitable purpose. And this 2 clause 15 has 7 limbs. But this 7 limb has 2 parts. First 6 limbs are different and 7th limb is different. And first 6 limbs are relief to poor, education, medical relief, yoga, preservation of environment, preservation of monuments, और object of artistic और historical interest. अगर ये 6 लिम्ब में आप आते हैं, 2 clause 15 में आप फॉल करते हैं, तो मैं बताऊंगा फर्क क्या दोनों में. And 7th limb is advancement of any other object of general public utility. लेकिन फर्क क्या है दोनों में? If you are in the 7th limb and your receipt from the commercial activity exceeds 20%, for example, if you are Indian Steel Association, Trader Association, or some PhD Chamber of Commerce and any chamber, industrial chamber, or say Gaushalla, if your commercial receipts exceeds 20%, then the income of that trust will be fully taxable, no exemption. But in the first 6 limb, even if you are doing a commercial activity, for example, if you are running a school, and with the school you are running buses, you are selling dresses, you are selling books, you are running a cafeteria in the school or canteen or hostel. These are the activity when you are charging fee for that activity. For example, कोई एसोसिएशन है, चैम्बर है, कोई इंडस्ट्रियल चैम्बर है, वो अपने मेंबर्स के लिए एग्जीबिशन लगाता है और उसके लिए फीस चार्ज करता है. It's an activity, it's a commercial activity for them. But in the first 6 limb, if you are falling in the first 6 limb, even if you are charging fee for the activity, and if that activity is incidental to the main object, then you will get the exemption even in that case. But the activity should be incidental to the main object. Now, what is the meaning of incidental to the main object? क्योंकि इस बार जो अमेंडमेंट आई है, जहां स्पेसिफिक वायलेशन की बात हम करेंगे, incidental to the main object. अगर आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि incidental to main object नहीं है, again it will be violation of section 11 or 2 clause 15. For example, you are running a school. You are taking tuition fees, computer fees, transport charges, dress charges, any charges, any activity for a fee, for a sum, for a consideration. It is incidental to the object. Tell me, if you are giving your auditorium for a star night, for Bollywood night, is it incidental to main object? आपके पास ऑडिटोरियम है
आप उसको शादी के लिए दे रहे हैं, इज इट इंसिडेंटल टू योर मेन ऑब्जेक्ट? नो सर। आप योगा में रजिस्टर्ड है, आप योगा के लिए मैट देते हैं, आप योगा की सीडी देते हैं, दिस इज इंसिडेंटल टू योर मेन ऑब्जेक्ट। आप योगा क्लासेस के चार्जेस ले रहे हैं, इट इज इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप साथ में हर्बल मेडिसिन बेचना शुरू कर दें, इज इट इंसिडेंटल टू योगा? आंसर इज नो। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आपका ऑब्जेक्ट रिलीफ टू पुअर है, आप एक धर्मशाला चलाते हैं, उस धर्मशाला को आप शादी के लिए किराए पे दे देते हैं, आप उस धर्मशाला का कैसे भी इस्तेमाल करके पैसा लेके रिलीफ टू पूरा करते हैं, आप स्टार नाइट भी करवा देते हैं उसमें। These activities are incidental to your main object because you are commercially exploiting the asset of a trust, a charitable trust, and the money is to be used for the relief to poor. Whenever I will come to the amendment made by Finance Act 2022, and there is a clause called specific violation, section 12 AB4 now has been fully amended. If there is a case of specific violation, then your 12 AB registration will be cancelled and income will be charged to tax. You might be doing an object which may be charitable, but if it is not incidental to your main object, you will not fall, you will not get section 11. आप एक हॉस्पिटल चलाते हैं, मेडिकल रिलीफ है, आप एम्बुलेंस के चार्जेस लेते हैं, आप आईपीडी के चार्जेस लेते हैं, आप ओपीडी के चार्जेस लेते हैं, जितने भी हॉस्पिटल मेडिकल चैरिटेबल हॉस्पिटल, इट इज इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट। लेकिन आप एक फार्मा कंपनी खोल दें, आप फार्मेसी खोल दें पूरे शहर में और दवाइयां बेचना शुरू कर दें, दैट इज नॉट इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट। आप आईपीडी के पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, उसका चार्जेस लेते हैं, दैट इज इंसिडेंटल। लेकिन आप फार्मा कंपनी बनाकर, आप फार्मेसी की दुकान खोलकर दवाइयां बेचते हैं, it is not incidental to an object. We have to understand this difference. So whenever you are auditing a charitable trust, please understand and please see whether the activities are carried as per the object of the trust, and they should be incidental to main object. Otherwise, section 11(4)(a) will come into the picture. I think I am clear. Now, what is the scheme? Yes, sir. I just want to ask if there is any specific definition of incidental to the main objective, because it is a very debatable issue then. It's a very subjective. It is a very subjective issue. मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दिए। Yes. ये आपकी विजडम पे है, आपको देखना पड़ेगा कि that is incidental to the main object or not. Okay. Okay. Now coming to section 11, 12, 13. Basically, they are the sections which covers the taxability of charitable trust or institutions are section 2, clause 15. As I explained it to you, what is charitable purpose is given in 2, clause 15. Then voluntary contribution, 2, clause 15, that gives the definition of income. Third is section 10, 23C, and in this Budget Finance Act 2022, now both the section 11, 12, 13 and 10, 23C has been now kept at par. जो भी differences थे, they have been removed now. Both the sections are now identical, similar. Section 115 BBC defines anonymous donation. We will come to that. What is anonymous donation, when it becomes taxable, and at what rate it becomes taxable. Section 115 TD, 115 TD, that is exit tax, and it's very dangerous, very draconian provisions. You have to always keep in mind this section 115 TD. Once you are into this section, then you will be charged at MMR on the market value, current market value of all the assets. आपकी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, मान लीजिए 1960 की, और आपने उसमें एक लैंड परचेज किया था, जिसकी बिल्डिंग बनाया उसके ऊपर, उसकी वैल्यू मान लीजिए 15 लाख रुपए, और आज 2022 में उसकी वैल्यू 15 करोड़ हो गई. If any violation is done and if you fall in the
Section 115 TD. Please understand you have to pay tax on the market value, on the fair market value of all the assets. That is tax on accredited income. What is accredited income? I will explain. And section 164(2), as I explained, when tax is to be charged at MMR. In case of charitable trust also, now there are instances when tax is to be charged at maximum marginal rate. Generally, it is slab rate. If you are registered with 12AB, there is no tax, exemption is there. If you cannot avail the exemption, then slab rate is there. But if the specific violations are done, which I will come on later part of this webinar, then tax is to be charged at MMR. Yani two kinds of tax is to be charged for a charitable trust. Now, what is the section? What is the scheme of section 11(1)? As I said in the beginning, section 12AB is the gateway of entering into section 11. And as you know, in Finance Act 2020, the Honorable Finance Minister has proposed that all the trusts, whether existing or new, they have to get a fresh registration. Though it was proposed in Finance Act 2020, but due to Corona pandemic, the notification was issued on 1st April 2021. And two forms were proposed, section Form 10A and Form 10AB. Every trust, if you are already registered with 12AA, you will get a permanent registration. Now, no registration is for perpetuity. No registration is for infinity now. Permanent registration means 5-year registration. And after 4.5 years, 6 months prior to the expiry of that registration, you have to apply fresh. In case of either you are a new trust or you are an old trust or a society or section 8 company, but you have never applied for 12AA, you can apply afresh. And in both the cases, you will get provisional registration, and provisional registration will be applicable for 3 years. But if you commence the activity of the trust, then within 6 months of the commencement of the activity, you have to apply for permanent registration. And permanent registration means 5-year registration. So please, friends, understand, if you have got provisional registration, आपको provisional registration मिल गया, आपने जैसी एक्टिविटी कमेंस की, आपको फॉर्म 10A भी भरना है. और बड़े मजे की बात बताता हूं मैं आपको, अगर आप पुरानी ट्रस्ट थे, आप 10 साल पुरानी ट्रस्ट थे, आपने जब 12AA नहीं लिया, आपने अभी फॉर्म 10A लिया, आपको प्रोविजन मिल गया, पुरानी ट्रस्ट है, विदिन 6 मंथ यू हैव टू अप्लाई फ्रेश. आप प्रोविजन रजिस्ट्रेशन लेके भूल मत जाना. अगर आप भूल गए तो आपका रजिस्ट्रेशन, आपका प्रोविजन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि विदिन 6 मंथ आपको अप्लाई करना है फॉर्म 10AB में. एंड नाउ फॉर्म 10AB हैज बीन नोटिफाइड, and that was section 12(A)(1)(AC), which was introduced by Finance Act 2020. Once you are registered in 12AA or 12AB, now it's 12AB, then what is the scheme of section 11? As I said in the beginning, the section 11 starts with subject to the provision section 60 to 63. Income of the property held for charitable purpose will not be included in the total income if the accumulation is not more than 15%. आपने 85% अप्लाई कर दिया. It is not spend, it is not expenditure, it is application. And application is a very wider term than application is very wider than that spend or expenses. Even if you have given advance for your property, it is application. If you have done capital expenditure, it is application. Please do not confuse it with the revenue expenditure or capital expenditure. It's application. Condition यही है, आपको 85% आपको खर्च करना है. You can accumulate only 15%. 1 करोड़ रुपए की आपकी रिसीट्स है,
85 लाख आपने खर्च कर दिया, 15% की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, आपको टैक्स नहीं लगेगा, यू विल गेट फुल एग्जेम्पशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, इफ यू कैन नॉट स्पेंड दैट अमाउंट, मान लीजिए आपको 31 मार्च में आपको पैसा आया 20 मार्च में और आप पैसा खर्च नहीं कर पाए, आप 1 करोड़ आपकी रिसीट्स है, आपको 50-60 लाख रुपए आप खर्च कर पाए, बाकी आप नहीं खर्च कर पाए, देन व्हाट इज द रेमेडी? Explanation 2 to section 1 says, if you cannot spend if the application falls short of 85%, either due to non-receipt or for some other reason, जैसे मैंने बताया आपको मार्च में पैसा आया, आपको फरवरी में आया पैसा, आप नहीं खर्च कर पाए, डोंट वरी, you file form 9A. You can file form 9A along with the return of income and it will be deemed as application. जैसे मैंने बताया था, आपने 1 करोड़ आया, 60 लाख खर्चा कर दिया, आप 25 लाख रुपए के लिए आप फॉर्म 9A फाइल कर दीजिए, तो आपका 85% हो गया, डीम्ड एप्लीकेशन हो गया, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बट व्हेन यू विल स्पेंड द मनी आउट ऑफ द डीम्ड एप्लीकेशन, it will not be taken as application in that year. Simple. Secondly, when to spend this amount? You have to spend the amount in the next financial year of the year when you receive the amount. For example, you receive the amount in March 2022, you cannot spend, you file form 9A for 21-22, you have to spend that amount in 22-23. Suppose you couldn't receive the amount and due to accrual system of accounting, you have made the entry the books of accounts and you receive the amount in April 22 or May 22. That means you have received the amount in 22-23 financial, you have to spend the amount in 23-24. आपने मार्च 22 में फॉर्म 9A फाइल कर दिया, उसका अमाउंट मिला आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको स्पेंड करना उससे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और अगर आपने स्पेंड नहीं किया, देन व्हाट विल हैपन? इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच इट हैज टू बी स्पेंट। Now, another important aspect is about the corpus donation. बहुत चेंजेस किए हैं, फाइनेंस एक्ट 20 में बहुत बड़ा चेंज था कॉर्पोरेट डोनेशन को लेकर, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन व्हाट इज कॉर्पस डोनेशन? 11(1)(d) says, because corpus donation has not been defined anywhere in the Income Tax Act. Income Tax Act में corporate donation का कहीं नहीं है, 11(1)(d) में आता है, डेफिनेशन कहीं नहीं दे रखी corporate donation की। एक और वही चीज हमारे को कंफ्यूजन है, कॉर्पस डोनेशन का मतलब है कोई कैपिटल के लिए कोई पैसा करना है, कोई लैंड बिल्डिंग के लिए, कोई बसों के लिए। सर ऐसा नहीं है। द जनरल क्लॉज इन द जनरल क्लॉज एक्ट, द कॉर्पस डोनेशन मींस अ स्टेबल फंड, अ लॉन्ग टर्म फंड, बट 11(1)(d) says voluntary contribution received with the specific direction that it shall form the part of the corpus. I again repeat, voluntary contribution is income as per 2 clause 24. Voluntary contribution received with a specific direction that it shall form the part of the corpus means that the direction should come from the donor, that it is going to be part of the corpus. अगर उसने कहा कि ये पैसा बिल्डिंग में खर्च करना है, अनदर इशू। उसने कहा बिल्डिंग, आप इस पैसे को ड्रेसेस बांट दीजिए, अनदर इशू। लेकिन अगर उसने कहा कि इट शुड बी फॉर्म द पार्ट ऑफ द कॉर्पस, प्लीज अंडरस्टैंड, उसने कॉर्पस डोनेशन कहा और पर्पस भी दिया, यू हैव टू फॉलो दैट। उसने कहा खाली कॉर्पस का पार्ट बनेगा, नाउ इट इज द ट्रस्टी और द चेयर और द मैनेजमेंट ऑफ दैट सोसाइटी और डायरेक्टर ऑफ द सेक्शन कंपनी हाउ टू स्पेंड दैट अमाउंट, but it will be a corpus fund. और फाइनेंस एक्ट 2021 ने कह दिया, ऐड कर दिया इसमें कि अगर आप कॉर्पस से एप्लीकेशन करेंगे तो हम एप्लीकेशन नहीं मानेंगे।
if you are spending amount out of the corpus fund, it will not be treated as application, क्योंकि इनकम नहीं है वो. जब हमने आपकी इनकम नहीं मानी तो एप्लीकेशन क्यों देंगे? सिंपल सा फंडा है. पहले लोग क्या करते थे, कॉर्पस से खर्च कर दिया करते थे, एप्लीकेशन मान लेते थे. Secondly, you have to invest that amount in the mode specified in 11.5. आपको 11.5 के मोड जो स्पेसिफाइड है वहां पैसा इन्वेस्ट करके रखना कॉर्पस का. These are the amendments made by Finance Act 2021. एक बात और कही थी बड़ी इंपॉर्टेंट. If you spend out of the corpus, we will not treat it as an application. But if in the next year you draw the amount from a voluntary contribution and refill that corpus, we will treat it as an application. For example, आपकी ट्रस्ट है, you have a trust, you have a voluntary contribution of say 1 crore and corpus donation of 50 lakhs. Now what you have done, you have spent 90 lakhs out of your voluntary contribution and 25 lakh out of your corpus donation. So how much you have spent? 90 plus 25, 1 crore 15 lakh you spent, but 25 lakh will not be treated as an application. If I twist that example, मान लीजिए 1 करोड़ का वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, आपने 70 लाख रुपए खर्चा कर दिया वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से और 25 लाख खर्चा किया आपने कॉर्पस डोनेशन से. आपका एप्लीकेशन कितना माना जाएगा? 70 lakhs and you have to pay tax on 50 lakhs. Though you have spent 95 lakhs. पहले हो जाता था, now it is not possible. You are getting my point. But if in the next year again you get, suppose you receive 1 crore in voluntary contribution, 50 lakh is corpus during the next financial year, and out of that 50 lakhs you withdraw 25 lakhs and refill your corpus. अगले साल में 25 लाख से आपने कॉर्पस को पूरा कर दिया जो आपने 21-22 में या 22-23 में निकाला था. और आपने अगर 70 लाख वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन खर्च किया, 25 लाख आपने कॉर्पस से निकाला और स्पेसिफाइड मोड में डाल दिया, आपका एप्लीकेशन कितना होगा? 95 lakhs. इन द सेम एग्जांपल, पहले साल में आपको बेनिफिट नहीं मिला, अगले साल में आपको बेनिफिट मिल गया क्योंकि आपने कॉर्पस से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से पैसा निकाला और अपने कॉर्पस में डाल दिया. तो दीज आर 3 चेंजेस. नाउ यू हैव टू maintain a separate account for that corpus. You have to invest that in 11.5 mode. If you spent out of the corpus, it will not be treated as an application in that year, in that particular year. But if you withdraw the amount from your voluntary contribution, refill the corpus, then it will be deemed application in that financial year. These were the changes by Finance Act 21, 2021. As I said in explanation 2, आपने पैसा you could not spend, you filled form 9A, you get the deemed application. For example, if you want to accumulate the fund for your future plans, then section 11.2 is there. पहले केस में आपने पैसा आपको मिला नहीं था या आप खर्च नहीं कर पाए थे, आपने फॉर्म 9A फाइल कर दिया, लेकिन आपको पैसा आ गया है, आपके पास 1 करोड़ रुपए आया, आपने 60 लाख रुपए खर्चा कर दिया, आपने बाकी 25 लाख रुपए को एक्यूमुलेट कर लिया कि मुझे 4 साल बाद बिल्डिंग बनानी है, 5 साल बाद बिल्डिंग बनानी है, तो मेरे को पैसा चाहिए, एंड यू फाइल फॉर्म 10 इन दैट केस. आप फॉर्म 10 फाइल कर दीजिए, सेक्शन है 11.2. बट 11.2 इज टू बी रेड विद सेक्शन 11.3. 11.2 कहता है कि आपको क्या करना है, आपको एक्यूमुलेट करना है फंड्स को. मैक्सिमम पीरियड ऑफ एक्यूमुलेशन इज 5 years. You have to file form 10 in that case. But 11.3 is very dangerous provision. And 11.3 what it says, if you made the violation of the following conditions, either you spend out of that money, accumulation से पहले आपने खर्चा कर दिया उसको, और आपने 11.5 के मोड से उस पैसे को हटा दिया, आपने दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कर दिया टू सम अदर चैरिटेबल ट्रस्ट, इवन इट हैज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB,
then it will be taxable in the year immediately following the year when violation occurs. और अगर 5 साल में आप खर्च नहीं कर पाए तो 6th ईयर में ये टैक्सेबल हो जाता था. It was the position before Finance Act 2022. But this Finance Act, as I said in the beginning, friends, when Honorable Finance Minister presented this budget, in the memorandum, 25 pages were dedicated to the charitable trust. See the importance. Every section, every subsection, every explanation. और 1023C में तो complete overhaul किया. 11.3 में कह दिया कि अगर आपने ये वायलेशन किया तो पहले तो अगर 5 साल तक एक्यूमुलेट फंड्स को इस्तेमाल नहीं करते थे तो इन द 6th ईयर इट बिकम टैक्सेबल. नाउ इट विल बिकम टैक्सेबल इन द 5th ईयर इटसेल्फ. प्लीज अंडरस्टैंड. अब एक सवाल उठता है कि जो पुराने एक्यूमुलेशन चले आ रहे हैं उनका क्या होगा? तो इसकी इंटरप्रिटेशन दो. एक इंटरप्रिटेशन ये है कि दिस एप्लीकेशन, दिस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 22-23. तो इसके बाद जो आप एक्यूमुलेट करेंगे उस पर नया प्रोविजन लगेगा और जो पुराने एक्यूमुलेटेड है उस पर पुराना प्रोविजन लगेगा. और दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि नहीं सर, अगर आपके ईयर, आपका 5th ईयर, अगर मान लो इस साल खत्म हो रहा है फिर तो बात ही नहीं है, फिर तो नेक्स्ट ईयर आपको मिलता है. लेकिन अगर ये एक्यूमुलेशन का ईयर 22 के बाद खत्म हो रहा है, देन न्यू प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल. As I said, you can accumulate for 5 years as per section 11.2. You have to invest the funds in 11.5 mode. Number 1. Please keep in mind the conditions given in section 11.3. If you violate these conditions, then it will become taxable. But there is a relief. Relief क्या है? If you want to change the purpose, because you have to mention the purpose. देखिए जब फॉर्म 10 भरते हैं तो लोग लिख देते हैं to the amount will spend for the object of the trust. Whether it is object or purpose, object और purpose में फर्क है. आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है टू रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. पर्पज अलग अलग हो सकते हैं. बिल्डिंग बनानी है, बसें लेनी है, एक्सपेंशन करना है, क्या करना है. That is a purpose. But the purpose should be within the object of the trust or the society or section 8 complete. तो आप ऑब्जेक्ट से बाहर जा ही नहीं सकते थे. जब आपने पहली टाइम एक्यूमुलेशन किया, you cannot accumulate the fund for a object which is not the object of the trust or society. It means if you are changing the purpose, you can change it, but you can change the purpose within the object only with the prior permission of your assessing officer. आप असेसिंग ऑफिसर के पास जाइए और कहिए साहब मैंने बिल्डिंग बनानी थी, बिल्डिंग नहीं बना पाऊंगा, मेरे को बस खरीदनी है, और आपको पर्पस चेंज कर देगा. सेकंड, एज आई सेड, और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग. वो क्या करते हैं कि एक्यूमुलेटेड फंड्स को डोनेट कर देते हैं. बस ये देखते हैं कि एटीजी में रजिस्टर्ड है, 12AA में 12A में रजिस्टर्ड है, लेट अस डोनेट. प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट डोनेट द एक्यूमुलेटेड फंड accumulated 11.5. If you donate that sum, it will be taxable. It will be taxable. आप डोनेशन दे दीजिए आउट ऑफ योर करंट इनकम, और उसमें भी एक क्लॉज था, एक्सप्लेनेशन थी 11(1)(d) के नीचे. If you are giving donation to another charitable trust or institutions as a corpus donation, it will not be treated as application. लोग करते क्या थे रोहित जी? ए ट्रस्ट ने बी को दिया कॉर्पस, अपना एप्लीकेशन मान लिया, बी की इनकम ही नहीं थी 11(1)(d) के हिसाब से. बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ए को दिया, पैसा डोनेट होके वापस आया. चेंज कर दिया था. अगर आप कॉर्पस डोनेशन दे रहे हैं टू अनदर चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, इट विल नॉट बी एप्लीकेशन फॉर ट्रस्ट ए. उसके लिए तो इनकम है ही नहीं. प्लीज अंडरस्टैंड, you can give donation to another charitable institutions or trust out of your current income, no problem. It should not be a corporate donation. अगर दे भी देते हैं कॉर्पोरेट तो आपका एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा. आपके पास 1 करोड़ रुपए आया, आपने 90 लाख खर्च कर दिया, बाकी 10 लाख बचा, उसको कॉर्पोरेट दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को. आपने 85 पूरा कर लिया. लेकिन आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड फंड्स इफ यू आर डोनेटिंग
then it is violative of section 11(3). But there is an exception. And exception is if the trust is going to be dissolved, then you can donate that amount to the trust or society having the same object. मैंने आपको दो एक्सेप्शन बता दिए सर. एक्सेप्शन नंबर 1, आपने पर्पस चेंज करना है, यू कैन गो टू द प्रायर परमिशन, यू कैन गेट द. अगर आपने परमिशन के बिना पर्पस चेंज किया, इट विल बी टैक्सेबल. आप डिजोल्व कर रहे हैं, आप एग्जिस्टेंस खत्म कर रहे हैं, यू कैन डोनेट. ठीक है सर? यस सर. सर जैसे अब अपन को समझ में आया कि वो 5th ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा. अगर मैं उसको इकट्ठा कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसको एक्सपेंड नहीं कर पाता हूँ तो इट विल बी टैक्सेबल इन 5th ईयर, है ना? तो सर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं अगर 5th ईयर में आके अगर अपना पर्पस चेंज कर देता हूँ, अपने एओ को बता देता हूँ कि आई वांट टू चेंज द पर्पस, और जो उस साल के एक्सपेंडिचर करने थे मुझे, उसको पर्पस बता के मैं वो 5 साल का एक्यूमुलेशन कैंसिल कर वो उसमें डाल देता हूँ, और जो उस साल के एक्सपेंडिचर थे उसके लिए फिर से फॉर्म भर देता हूँ कि ये मैं 5 साल वो आपकी इच्छा है सर. आप हर साल ये ऑप्शन ले सकते हैं. तो मतलब ये हार्वेस्टिंग हो सकती है ऐसी? सर समझिए दोबारा, आपने 21-22 में एक्यूमुलेट किया, 27 तक खर्च करना है पैसा. हाँ. ठीक है सर. 21-22 वाला 26-27 तक खर्च करना है. हाँ. आप 22-23 में जो एक्यूमुलेट करेंगे उसको 28 तक खर्च करेंगे, जो 24 में 29 तक खर्च करेंगे. आपने जो 21-22 में कहा एक्यूमुलेट किया था, आपने 26-27 में बोला कि मेरा पर्पस चेंज करना है, लेकिन पर्पस आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन 31 मार्च 27 तक यू हैव टू स्पेंड दैट अमाउंट इन द न्यू पर्पस. अदरवाइज क्या होगा? क्योंकि आपने 21-22 में जब उसको फॉर्म 10 भरा था, यू हैव टेकन द डीम्ड एप्लीकेशन, आपने बेनिफिट ले लिया ना उसका. Okay. This was 11, section 11.2 and 11.3. And now there is a very important explanation to section 11.1. And what it says is बड़ा important है. देखिए, when we are in the purview of section 11, 12, 13, friends, section no other provision of the act will be applicable. You know there are 5 acts of income. लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम हेडलेस होती है. हम ऐसा नहीं करते कि रेंटल इनकम आती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे 24 में जाके, बिजनेस इनकम आती है तो उसको 28 से 44C में लेंगे. और यही कारण है, even if the charitable trust or institution has receipts more than 1 crore or 10 crore, even then tax audit is not required because the sections 28 to 44C will not be applicable. Once you have section 11, 12, 13, other provisions are not applicable. Capital gain के लिए 11(1) capital दे रखा है, 45 to 55 not applicable. Business income 28 to 44C not applicable. लोग ये सवाल पूछते हैं, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसकी रिसीट 20 करोड़ रुपए है, तो क्या टैक्स रेट होगा? आंसर इज नो, नहीं होगा. आपको फॉर्म 10 भी फाइल करना है, क्योंकि 44AB तो 28 से 44C का सेक्शन है. जब वो प्रोविजन नहीं लगा, business definition has been given in 2 clause 13 and we fall in 2 clause 15 charitable purpose. हम 2 clause 13 में फॉल नहीं करते सर, but they have specifically mentioned in explanation 3 to 11.1 the provision of section 40A3 and 40A shall apply mutatis mutandis. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, 40A3 है कैश एक्सपेंडिचर मोर देन 10,000 और 40A है if you have not deducted TDS then 30% of the expenditure will be disallowed. अब mutatis mutandis हो गया, यानी उसका मतलब वही निकालना है जो वहां लिखा है. अब इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग परव्यू बनता है कि हाउ द सिचुएशन चेंज विद द चेंज ऑफ सेक्शन. देखिए, आप मान लीजिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आपका 1 करोड़ रुपए की रिसीट्स है
और आपने 30 लाख रुपए का खर्चा कर दिया जिसपे आपने टीडीएस नहीं काटा, रोहित जी, you have not deducted TDS on 30 lakhs of rupees. What will happen? 9 lakhs will be disallowed. 30% of the sum will be disallowed, and you have to pay tax. But in 11, 12, 13, what will happen? It is mutatis mutandis. 30% will not be treated as application. यही तो मतलब हुआ। अगर मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का आपकी रिसीट्स है और आपने पूरा 1 करोड़ खर्चा कर दिया था और 30 लाख रुपए पे आपने उसको नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा, तो व्हाट विल हैपन? योर एप्लीकेशन विल बी 91 lakhs. 91 lakhs होगा ना सर? The effect will be nil on you because it is more than 85% of, even after disallowance of your application. You are getting my point? If you do not deduct tax in case of a business organization, you have to pay tax. But in case of a charitable trust, if even after the disallowance of this explanation, your application is more than 85%, it is not going to affect you. But in case of capital expenditure, what will happen? In section 43, what it says, if you have spent in cash in more than 10,000, then what is the result for capital expenditure? You will not get the depreciation. You will not get the depreciation. But in case of charitable trust, you will not get the application. 1 करोड़ रुपए पे मान लीजिए आपकी रिसीट्स है और आपने 40 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च कर दिया कैश में, more than 10,000. If it is a business organization, what will be the effect? 40 lakhs will not be added to the cost and you will not get the depreciation on 40 lakhs. भाई 40 लाख का depreciation नहीं मिलेगा आपको, 15% या 10% जो भी है फिगर आती है. But in case of charitable trust, 40 lakhs will not be application. तो 40A3 और 40AIA का इफेक्ट चैरिटेबल ट्रस्ट में और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिवर्स होता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां पर डेप्रिसिएशन नुकसान होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन नुकसान हो जाता है पूरे. तो एक्सप्लेनेशन 3 to 11.1 is very important. Another is 11.4 and 4A. I will come when I will discuss the amendments. What are the amendments? If you are doing an activity which is not incidental to main object, then it will be a business income and the provision of section 28 to 44C will be applicable to you. तो आपको वो सारे provision लग जाएंगे जो 28 से 44C वाले होते हैं. If the activity is not incidental to the main object. 11.6. Again, it's very important provision, sir. This is about the depreciation allowance. देखिए पहले क्या होता था, लोग आपने मान लीजिए 3 करोड़ की बसें ले ली तो आपने 3 करोड़ का एप्लीकेशन मान लिया. बट वेन एवर यू राइटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑफ कोर्स आपने एप्लीकेशन लिया अलग बात है, लेकिन बुक्स में तो कैपिटलाइज करेंगे 3 करोड़ को, उसका डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे. तो एक बहुत डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का राजस्थानी गुजराती समाज में, जिसमें कहा था कि साहब आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, एप्लीकेशन भी मिलेगा. क्योंकि सेक्शन में कहा नहीं इस बात को, लिखा नहीं इस बात को. कहाँ लिखा है कि आपने अगर एप्लीकेशन ट्रीट कर लिया है तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, यू आर कैपिटलाइजिंग इट. Then this amendment was made, and the amendment is, if you have taken the application of that capital expenditure, आपको depreciation allowance नहीं मिलेगा. But if you have not taken the capital expenditure application, you can claim the depreciation. You can claim that. This is 11.6. And what is 11.7? Income exempt under section 10 other than 10.1 and 10.2 shall be have to be applied as per 11.1. आपको कोई exempt income भी आ रही है other than agricultural income, तो आपको 11.1 के हिसाब से स्पेंड करनी है. But this 11.7 has a provision now, and the provision was added by the Finance Act 2020. That is very important, and the provision says, if you are registered with both the sections 12AB and 1023C, then
when this Form 10A was notified, your registration under Section 12AA automatically ceased to exist. Now you cannot have both the registration simultaneously. पहले लोग दोनों registration लिया करते थे, 1033C में registered होते थे और 12AA में होते थे. Now you have to choose whether to continue with 12AA or you want to continue with the 1023C. But by default, 12AA registration stands to exist, stands cancelled. Any questions, sir, till now? So there are a few questions in chat box. If you want, we can take them up. अगर अभी तक से रिलेटेड है तो ले लीजिए, नहीं तो बाद में लेके जैसे आपको सही लगे. एक क्वेश्चन है, whether a religious trust running for management of temple can be registered under section 12A. Why not? देखिए रिलीजियस ट्रस्ट को लेके आपका अगर 11(1) पढ़ते हैं आप तो लिखा है कि either for religious purpose or for charitable purpose, partly for religious purpose, partly for charitable purpose. Even if you are a religious trust, you can get registration under section 12AB, but for getting the registration under section 80G, there is a condition. If you are charitable as well as religious trust, then your spending on the religious activity should not be more than 5%. This is one change, one difference. Another difference for the religious trust is in section 115 BBC, anonymous donation. In case of charitable trust, charitable organization, if your donation is more than 5% or 1 lakh, whichever is more, anonymous donation are allowed up to the limit of 5% or 1 lakh rupees. But in case of religious organization, क्योंकि वहां पर दान पात्र होता है, 115 BBC does not come into the picture. So these are two difference between the religious and charitable trust. And religious purpose has not been defined anywhere in the act. तो आपको जनरल क्लॉज से जनरल सेंस में लेना पड़ता है उसका. आगे चले सर. Yes, sir. Okay. This was the scheme of section 11. How to get the exemption, how to accumulate it, what will happen to the depreciation allowance, 11(3) violation, 11(4)(a), which commercial activity which are not incidental to main object. As I said, 12AB or 12AA is the entry point to get 11, benefit of section 11. And section 13 is the exit route. सेक्शन 12AB से आप अंदर आए, 11 में आपको बेनिफिट है, सेक्शन 13 का वायलेशन जैसे ही करेंगे, you will be kicked out of it. And what this section 13(1)(c) is very important. 13(1)(a) and B, if this and the heading of this section is very interesting. इस पे बड़ी डिबेट होती है. वो कहता है सेक्शन 11 not to apply. अब जैसे ही हम इसकी वायलेशन करते थे तो डिपार्टमेंट का इंटरप्रिटेशन होता था कि भाई सेक्शन 11 नॉट टू अप्लाई, इसका मतलब है कि आपको एग्जेम्पशन खत्म. दिस फाइनेंस एक्ट 2022 हैज नाउ क्लैरिफाइड दैट ओनली दैट पोर्शन ऑफ इनकम व्हिच इज वायलेटिव ऑफ सेक्शन 13(1)(c) और 13(1)(d will be taxed, otherwise you will get the exemption. And the two important section is this is 13(1)(c) and 13(1)(d) and 13(2). And what is 13(1)(c) says? If the trust deed or bylaws ensures any income or property used or applied for the benefit of the interested parties. And who are the interested parties? It is given in section 13(3). आपने इंटरेस्टेड पार्टीज को कोई बेनिफिट दिया, कोई इनकम दिया, तो आपको सेक्शन 11 एप्लीकेबल नहीं होगा. एंड 13(3) में इंटरेस्टेड पार्टीज दे रखी है. दीज आर द ऑथर्स, ट्रस्टीज, फाउंडर, मैनेजर और द कंसर्न इन विच दीज persons has substantial interest,
and a person who has donated more than 50,000 rupees to that institution or trust or society. These are the interested parties. अगर आपने इनको कोई बेनिफिट दिया तो सेक्शन 11 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. लेकिन 13(2) has given carved out the exceptions to it. अगर रीजनेबल आप बेनिफिट दे रहे हैं, रीजनेबल रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, रीजनेबल इंटरेस्ट दे रहे हैं, रीजनेबल रेंट दे रहे हैं, आपने ट्रस्टी से प्रॉपर्टी रेंट मिली, रीजनेबल रेंट दे रहे हैं, तो आपको 13(1)(c) नहीं लगेगा. But this Finance Act 2022 has made a drastic change. A penalty provisions in section 271 AAE now has been given, where you are being penalized 100% for first time violation and 200% for after violation, a second or consecutive violation. And secondly, what they have said, that that part of income will be taxed at maximum marginal rate. तो 13(1)(c) की अगर आपने वायलेशन की, 13(2) को एक्सेप्शन दिया कि रीजनेबल रेंट दे रहे हैं, रीजनेबल सैलरी दे रहे हैं, रीजनेबल इंटरेस्ट दे रहे हैं, that is allowed. If it is not reasonable as per arm's length price, then it will be taxed, and it will be taxed at maximum marginal tax rate. So this is the basic scheme of section 11, 12 and 13. ठीक है रोहित जी. अब मैंने कुछ फार्मूले डेवलप किए हैं फॉर इजी लर्निंग और इजी अंडरस्टैंडिंग. मैंने कुछ बेसिक बनाए हैं वंस एंड टूज के नाम से. और वंस क्या है? वंस है चैरिटी इज ऑलवेज ए चैरिटी. देखिए सर, अगर आप एक बार चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो इट इज ऑलवेज ए चैरिटी. आपके पास में कोई तरीका नहीं है कि आप वहां से बाहर आ जाए. केवल एक तरीका है कि आप दूसरे ट्रस्ट या सोसाइटी को मर्ज कर दें. बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि वी हैव पेड टैक्सेस, तो हम उस पैसे को इस्तेमाल कर लेते हैं. नहीं सर, आप नहीं कर सकते. फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनेजर और ट्रस्टी और मेंबर और डायरेक्टर्स, यू कैन नॉट यूज दैट मनी. इट हैज टू बी स्पेंड for the object of the trust. Even the accumulated funds, देखिए दो तरह का accumulation है. एक accumulation है जहाँ 15% आप जो बचाते हैं वो भी तो accumulation है, और एक accumulation है 11(5) वाला. तो अगर 11(5) के accumulation की आपने वायलेशन कर दी तो MMR लग जाएगा आपको. और जो 15% वाला वायलेशन आप करते हैं, तो आप अगर ऑब्जेक्टो अल्ट्रा वायरस कर रहे हैं तो आपके ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा. टैक्स तो लगेगा नहीं उसके ऊपर. सर, आपने 1 करोड़ रुपए में से 90 लाख खर्चा कर दिया, आपको एग्जेम्पशन मिल गई, बाकी जो 10 लाख बचा आपने उसको पर्सनल बेनिफिट खर्चा कर दिया. सर, अगर आप उसकी वायलेशन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्टिविटीज आर नॉट एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी और ट्रस्ट. और 11(2) में आपने जो एक्यूमुलेट किया था, आपने 11(5) के मोड में किया था, उसको आपने वायलेशन किया तो आपका मेमोर लग जाता है. Another once is, once the income is available, exemption is available under section 11(1), income is not to be charged headwise. ये बड़ा लोगों को कंफ्यूजन होता है. मान लीजिए आप एक धर्मशाला चलाते हैं. वो धर्मशाला में क्या होता है सर, आपको रेंट से इनकम भी आती है, आप रूम उसको रेंट पे देते हैं, आप मैरिज पार्टी के लिए भी दे देते हैं, उसके बाहर दुकानें भी हैं, वहां से आपको रेंट भी आता है. ठीक है ना. आपकी बैंक में FD आ रहा है, वहां से आपको इंटरेस्ट भी आता है. तो क्या रेंट को हम 22 पे लेके जाएंगे? क्या इंटरेस्ट को 56 पे लेके जाएंगे? या जो आपको इनकम आ रही है मैरिज पार्टी को 28 में लेके जाएंगे? नहीं सर, हेड वाइज नहीं है. क्योंकि सेक्शन 11 बड़ा यूनिक सेक्शन है. ये चार्जिंग सेक्शन भी है और ये एग्जेम्पशन का सेक्शन भी है. देखिए, हमारे स्कीम ऑफ इनकम टैक्स में बड़ी ब्यूटी है. हमारा इनकम टैक्स एक्ट शुरू होता है सेक्शन 4(5) से, जहां स्कोप ऑफ टोटल इनकम दे रखा है. और हम जो टैक्स करते हैं वो टोटल इनकम पर टैक्स करते हैं. इट इज नॉट ए टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, इट इज नॉट ए टैक्स ऑन इनकम, इट इज टैक्स ऑन टोटल इनकम. एंड व्हाट इज टोटल इनकम? इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 clause 45. टोटल इनकम इज द अमाउंट ऑफ इनकम एज रेफर्ड इन सेक्शन 5 and computed as per the provisions of the Income Tax Act.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर? टोटल इनकम, पहली बात तो इनकम होनी चाहिए, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आनी चाहिए सेक्शन 5 में, और कंप्यूटेशन मैकेनिज्म में आनी चाहिए। जब सेक्शन 11 कहता है टोटल पार्ट इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगा, तो कंप्यूटेशन मैकेनिज्म नहीं आ रहा उसमें। जब कंप्यूटेशन मैकेनिज्म नहीं आ रहा तो हेडवाइज इनकम भी नहीं जाएगी उसकी। सर हमारे जो 5 हेड है उसमें पहला जो सेक्शन होता है चार्जिंग सेक्शन होता है। फॉर सैलरी 15 चार्जिंग सेक्शन, फॉर इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन, for business income 28 is charging section, for capital gain 45 is charging section, for other sources 56 is charging section। और उसके बाद में कंप्यूटेशन मैकेनिज्म दे रखा है। कैपिटल गेन में सेक्शन 48 है। तो अगर आप सेक्शन 11 में है सर तो आप हेडलेस हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि साहब मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, रेंटल इनकम है तो 30% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं सर, आपकी सिंपल कंडीशन है 85% खर्च कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, नमस्ते बात कर। थर्ड वन इज if the income of the trust is categorized as business income 11(4)(a), then the provision of section 28 to 44(c) will be applicable। फिर आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना है, फिर आपको 40(a) भी लग जाएगा, सारे सेक्शन लग जाएंगे, डेप्रिसिएशन भी लग जाएगा, सब लग जाएंगे सर। और फोर्थ कंडीशन इज एंड फोर्थ समराइजेशन इज once accumulated it should not be donated। ठीक है सर। There are tools, some tools are there which are to be remembered। I will share this PPT to you for the benefit of our viewers। There are two definitions, one is 2 clause 13 is business and 2 clause 15 is charitable purpose। दोनों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। Whether in 2 clause 30 you might be doing a business, जैसे मैंने बताया आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, एक हॉस्पिटल है जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, सिमिलर हॉस्पिटल है जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, अपोलो हॉस्पिटल है वो कमर्शियल एक्टिविटी करता है, दूसरा है वो चैरिटेबल करता है, दोनों सेम काम करते हैं, दोनों बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन वंस यू आर 2 clause 15 2 clause 13 will not be applicable to you। There are two very important aspects of a charitable institution। One is the object, then another is application। पूरा 2 पिलर्स पे खड़ा है सर सेक्शन 11। ऑब्जेक्ट आपके होने चाहिए 2 clause 15 वाले, और एप्लीकेशन आपको करना है सेक्शन 11 के हिसाब से। आपने इसमें से किसी की वायलेशन की, आप पार हो जाते हैं। Two non-compliances, diversion of income or non-compliance of any other law will lead to cancellation of registration। Though this section 12(ab)(4), this Finance Act has widened the scope, very wide scope of the cancellation। I will come to that also। Two changes, different results। If you change the object of the trust, you have to apply fresh। अगर आपने ऑब्जेक्ट चेंज किया सर तो विद इन 1 month यू हैव टू अप्लाई फ्रेश फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12(ab) और 12(a)। बट इफ देयर इज चेंज इन मैनेजमेंट, नो इफेक्ट। लोग यही पूछते हैं जब मैनेजमेंट चेंज हो गई, ट्रस्टी चेंज हो गया, ट्रस्ट पे कोई, सोसाइटी पे, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इफ इट इज चेंज इन द ऑब्जेक्ट, यू हैव टू अप्लाई फ्रेश रजिस्ट्रेशन। Two important conditions have to be kept in mind while drafting a trust deed। Number 1, it should be an irrevocable transfer, and number 2, there should not be any benefit to the interested parties, to the trustee। If it is there, it should be at the arm's length price। And last one is, in application includes both revenue expenditure as well as capital expenditure। Section 11 does not distinguish between capital or revenue expenditure।
I have touched upon the 12AB, then cancellation registration. I will come once I discuss the amendment by Finance Act 2022. Very wide discussion. This is tax on accredited income. As I touched that section earlier also, is very draconian provisions are there. And section 115 TD, it was introduced by Finance Act 17, I think, or 16, I don't remember. So 17 या 16 में आया था. And when it comes into the picture, if a charitable institution which is registered in AA or AB has converted into any form which is ineligible for 12AB, आप नॉन चैरिटेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं. अभी तो पॉसिबल नहीं है, जो पुरानी ट्रस्ट चली आ रही है उनमें था. Merged with any entity not having similar object or 12AA or AB, and in case of dissolution fails to transfer the asset. As I said, when you are going to dissolve your trust, you can transfer the asset to the trust having the same objects, but these has to be transferred within 12 months from the date of dissolution. If you do not transfer, then this section 115 TD will come into picture, and you have to pay tax on the additional accredited income. And what is accredited income? Accredited income is the fair market value of all the assets minus liability, and the fair market value of the asset has to be calculated as per Rule 17 CB. And in the explanation to section 115 TD, it is said, if the trust do not get the registration, then it will be treated that it has converted into an ineligible entity. तो ध्यान रखना है सर कि अगर आपका 12AB कैंसिल हो गया, किसी भी कारण से हो गया, तो आप गए, आपको 115 TD लग जाएगा. तो एक सारी कंडीशन हैज टू बी फॉलोड. Anonymous donation, I have touched anonymous donation, anonymous donations. Now coming to the amendments by Finance Act 21 and 22. These two Finance Act 21 and 22, they have made overall changing in the taxation and assessment of the charitable trust. As I said, in Finance Act 21, they were changing the corpus donation, how the corporate donation will be treated. I have discussed at long in length. Another change by Finance Act 21 was, and explanation 5 was added. And this is very interesting. There was a decision of Subros International by Supreme Court of India, and it said that you can get the benefit of set of losses. मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की इनकम है और आपने 1 करोड़ 20 लाख खर्च कर दिया पहले साल में. तो कोर्ट ने ये कहा था कि सर देखिए, एक बहुत बड़ा डिसीजन था रोहित जी, महाराणा मेवाड़ का था एक डिसीजन. उसमें ये कहा था कि मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की इनकम है, आपने पहले साल में 90 लाख खर्चा किया और अगले साल में आपने 80 लाख खर्चा किया. तो उसने कहा साहब देखिए, पिछले बार मैंने 5 लाख फालतू खर्च किया था और इस बार 5 लाख कम किया, तो मुझे बेनिफिट दे दो. तो कोर्ट ने कहा नहीं सर, 85% हैज टू बी कैलकुलेटेड ईयर टू ईयर बेसिस. ठीक है ना सर. लेकिन अगर आपने खर्चा 1 करोड़ से ज्यादा किया, मतलब जितना आपके रिसीट्स है, तो कोर्ट ने कहा था कि नहीं सर, आप देखिए, आपने अगर 1 करोड़ का खर्चा किया तो आपने 1 करोड़ 20 लाख खर्चा किया, हम आपको 20 लाख का सेटअप दे देंगे अगले साल. बट दिस फाइनेंस एक्ट 21 हैज डन ए वेरी ड्रास्टिक चेंज दैट you will not be eligible for any set of losses from the previous year or any accumulated losses. Now, what is the meaning of this? वही कहते हैं कि सर आपकी अगर इनकम 1 करोड़ है तो आप 1 करोड़ 20 लाख कैसे खर्च करेंगे? क्यों? वो कहते हैं सर देखिए, आपने अगर कॉर्पस से खर्चा किया तो हम उसको इनकम नहीं मानते, तो एप्लीकेशन में नहीं दे रहे. आपने अगर बोरोड फंड से खर्चा किया तो ये कह दिया था कि अब आपको, इसी फाइनेंस एक्ट 21 में कहा था कि अगर आपने बोरोड फंड से खर्चा किया तो आपको एप्लीकेशन नेट ऑफ बोरोड फंड मिलेगा.
और जब आप बोरोड फंड का रीपेमेंट करेंगे तो आप एप्लीकेशन लेंगे। मतलब आपने 3 करोड़ रुपए की बसें खरीदी और 2 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो आप एप्लीकेशन 3 करोड़ नहीं मानेंगे, आपका एप्लीकेशन होगा 1 करोड़ उस साल में। और जब 2 करोड़ की रीपेमेंट आप करेंगे तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब तीसरी बात थी एक्रूड लायबिलिटी को लेकर, कि मान लीजिए आपकी लायबिलिटी एक्रू हो गई है, आप एक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं और आपकी लायबिलिटी एक्रू हो गई, इस बजट फाइनेंस एक्ट 22 में उसको भी खत्म कर दिया और ये कह दिया कि हम एक्रूड लायबिलिटी को पेमेंट बेस पे ही आपको एप्लीकेशन देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो ITR 7 फाइल करनी है, जो कंप्यूटेशन बनानी है, वो कैश फ्लो बेस पे बनानी है। तो आप अगर 100 रुपए आपको मिले 100 ही खर्च करेंगे ना, you will not get the benefit of any set of losses or accrued for the previous year. That was the change by Finance Act 21. Now this Finance Act 22, they have divided these changes, systematic changes, into 3 paragraphs. That is, I have taken from the memorandum explaining the provision of the Finance Act, Finance Bill, and 3 paragraphs are there. One is the ensuring the effective monitoring and implementation. Government wants to effectively monitor the working of the charitable trust or the institutions. And secondly, as I said, there are 2 kind of regime. One is section 11, 12, 13 and another is 1023C. 1023C में 3AD और 3AE में तो बेनिफिट है, जहां पे आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और मेडिकल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो अप टू 5 करोड़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए आपको दे दिया बेनिफिट, ब्लेंडेड एग्जम्पशन है। और 1023C 4, 5, 6, 6A के लिए एक अलग रिजीम था और उसके प्रोविजो थे, 19 प्रोविजो उसमें है 1023C में, अभी बढ़कर वो 23 हो गए, 22 या 23 पर। तो बोथ द रिजीम नाउ हैव बीन ब्रिंग एट पार, दोनों में जो भी चेंजेस थे, जो भी डिफरेंसेस थे, वो खत्म कर दिए। एंड थर्ड वाज प्रोवाइडिंग क्लैरिटी ऑन द टैक्सेशन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। जैसे मैंने कहा कि 31C में अगर हो जाए तो क्या होगा, कब MMR लगेगा, कब स्लैब रेट लगेगा, तो उसकी क्लैरिटी दी। तो 3 पैराग्राफ में उन्होंने बांट दिया। फर्स्ट इज द एंश्योरिंग द इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड व्हाट दे से, नंबर 1, now maintaining books of accounts has been made compulsory. होता क्या था, there is section 44AA where maintenance of books of accounts are been given कि आपको कब कब maintain करनी है books of account, but similar provisions were not there 11, 12, 13. As I said, once you are in section 11, 12, 13, other provisions are not applicable. 44AA तो आपको लगता है बिजनेस इनकम के लिए। अब कह दिया कि सर आपको books of accounts is to be maintained mandatorily, and they will prescribe it how to maintain it. Second, penalty for passing unreasonable benefit to the trustee or specified person in section 31C. अगर आपने अनरीजनेबल बेनिफिट पास किया इंटरेस्टेड पार्टी को इन 31C और 31D में, तो in addition to taxing that amount, they have mentioned a penalty under section 271AE, and this 271AE has a very unique feature where the first violation you have to pay penalty at the rate of 100%, and second violation and thereon it will be 200%. So please understand and please ensure, if any benefit or any remuneration, any interest or any other benefit is given to the interested party like trustees or managing committee members, directors, or any concern which have these person as a substantial interest, then it should be at the arm's length price. And third one is, as I said, now it's an automatic process to get the registration. Very automatic process है, आपको आता है. And what they have said, because a lot of trusts are getting the registration due to this automatic mode, and even the ingenuine registration are there. So they have now provided
ample power to the Commissioner Income Tax to change, to cancel that registration. Secondly, as you know, in 1023C, it was an approval, while 12AA was a registration. And when under section 143(3), when assessing officer refers that that approval of this institution should be cancelled or withdrawn, there was no time limit prescribed to the principal commissioner when he has to get the registration cancelled or to retain that registration, to retain that approval. Now, time limit has been prescribed that you have to take a decision within 6 months from the end of the quarter when this request from the AO has been forwarded to you. And as I said, to effectively control and monitor the working of this charitable trust, this section 12AB now has been redrafted. Earlier, this provision was if the commissioner finds the objects are not genuine or they are not doing the activity as per the object, he has the power to cancel that, to revoke the registration. But now this section 12AB4 says 3 conditions are there now. 1, if principal commissioner of Commissioner Income Tax has noticed specified violation. And what are the specified violations? They have been mentioned here. Number 2, if he has received a reference from the assessing officer under section 143(3). And third one is, such cases has been selected in accordance with the risk management strategy formulated by them. Now, what is the risk management strategy? Because this section are now being used, this particular term, risk management strategy has been used in very many sections nowadays, 148. तो अगर ये 3 conditions हैं, in 3 conditions, the principal commissioner income tax or CIT, he will call for such informations, he will give an opportunity of being heard, he may cancel or retain that registration. And what is the specific violation now? That is very interesting. If any of this condition, if any of the situation happens, it's a case of specific violation. और आपका registration cancel हो सकता है. If the income has been applied for other than the object of the trust, मैंने कहा था ना अभी आपसे कि आपने अगर income और accumulated income both, आपने जो 15% बचाया था, आपने अगर उसको भी अदर देन द ऑब्जेक्ट खर्च किया, लोग 85 के बाद में 15% को भूल जाते हैं, कहते हैं कहीं खर्चा कर दो, लोन दे देते हैं कंसर्न्स को. मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, लोन दे देते हैं. सर अगर ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट लोन देना नहीं है भैया. द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट इज नॉट टू गिव लोन. If you have spent you have applied the amount other than the object. Secondly, if you are doing a commercial activity, profit and gains from business and profession, which is not incidental to the main object. वही चीज जो मैंने इतना स्ट्रेस दिया था पहले पार्ट में सेमिनार वेबिनार के, if you are doing any activity which is not incidental to a main object. आप एक गौशाला चलाते हैं सर, आप गौशाला में गौ का घी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, दैट इज इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट. लेकिन अगर आप डेयरी फार्म खोल देंगे, आप बाहर से दूध इकट्ठा करके गौशाला के नाम बेचना शुरू कर देंगे सर, दैट इज नॉट इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट. Every auditor now has to ensure that the activities are being carried out as per the which is incidental to the main object. Number 3, even if you are doing the activity which are incidental to the main object, but separate books of accounts are not maintained. हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं सर. अगर हॉस्टल हमारे पास है तो हॉस्टल की बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट होनी चाहिए. Even if the activity is incidental to the main object, separate books of account has to be maintained. ये 11(4)A में पहले भी लिखा हुआ था, हम ध्यान नहीं देते थे. Any part of the income is being applied for the private religious purpose, वो पहले भी था, अब भी है. Any part of the income has been applied for any particular religious community or caste, पहले भी था, अब भी है. And that's very important.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है सर। एनी एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट बाय द ट्रस्ट और द इंस्टीट्यूशन विच इज नॉट जेन्युइन, 68 में हम कहते हैं ना क्रेडिट वर्दीनेस, जेन्युइननेस। सर आप ऑब्जेक्ट तो कर रहे हैं एज पर द ऑब्जेक्ट, लेकिन जेन्युइन नहीं है, आपने बोगस बिल डाल दिए। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आपने खर्चा तो किया, आप हॉस्टल चलाते हैं, मेस का खर्चा करते हैं, लेकिन आपने बोगस बिल कर दिए। आपने फर्जी फर्मों से बिल लेके डाल रखे हैं सर। दिस इज नॉट अ जेन्युइन एक्टिविटी। बहुत बड़ी वायलेशन करते हैं लोग। आप स्कूल चलाते हैं, आपने टीचर्स के नाम फर्जी डाल रखे हैं जस्ट टू फिल द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी और AICTE। आपने PF रजिस्टर में गलत नाम डाल रखे हैं, दैट इज नॉट अ जेन्युइन एक्टिविटी सर। आप एजुकेशन तो कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पूरा कर रहे हैं, these are not genuine. And secondly, it is not genuine. Second, it is not being carried out in accordance with all or any condition subject to which it was registered. अगर आपने जो कंडीशन ऑफ ट्रस्ट थी या बायलॉज थे सोसाइटी के, स्टेट बायलॉज को आपने फॉलो नहीं किया, आपने जो ऑर्डर ने ट्रस्ट डीड में जो बायलॉज लिखे उसको फॉलो नहीं किया तो भी, और थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, if you are not complied with any law of the time being in force, आप स्कूल चलाते हैं, PF एक्ट की वायलेशन करते हैं, आप स्कूल चलाते हैं, AICTE की गाइडलाइंस की वायलेशन करते हैं, कॉलेज चलाते हैं, आप हॉस्पिटल चलाते हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है MCF का, MCT का या किसी भी एनफोर्सिंग एजेंसी का। In all the three conditions, it will be a specific violation. The scope of cancellation now is very ample. सावधानी हटी और दुर्घटना घटी. And the order of revocation has to be passed within 6 months from the end of the quarter in which first notice is issued. That was the first part, ensuring and monitoring the working of the trust. Second part is bringing consistency in the provision of two regime. दोनों regime में कहीं डिफरेंस थे, जैसे accumulation का provision है. अब accumulation provision में आपको वहां तो फॉर्म 10 भरना होता था 11(2) में, यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं था, उसको डाल दिया. 11(3) की वायलेशन कंडीशन यहाँ पे नहीं थी 1023C में, उसको भी डाल दिया. तो accumulation provision now at par with section 11(2) and 3. 13 section 13 provisions, similar provisions have been brought in section 1023C. अगर आप ऐसा कोई बेनिफिट पास ऑन कर रहे हैं, आप कोई असेट्स को अप्लाई कर रहे हैं, आप रिलेटेड कंसर्न को दे रहे हैं, now it will be violation in 1023C also. 115 TD, 150 TD was not applicable in case of institution registered in 1023C. It was applicable for 11 and 12 only. Now the same provision will be applicable. And last one is, you have to mandatorily file the return of income in case of 1023C. तो 134A में आपको 11, 12, 13 का रिटर्न फाइल आपको करना था. 1023C now return has to be filed mandatorily. And the last one is clarity on the taxation in certain circumstances. When the tax will be levied at normal rate and when tax will be levied at maximum marginal rate. इसको लेकर क्लैरिटी नहीं थी, ना इट हैज बीन क्लैरिफाइड. होता क्या था कि अगर आपकी कमर्शियल एक्टिविटी है, मान लीजिए मोर देन 20% रिसीट आपकी कमर्शियल एक्टिविटी से है, एंड विच इज इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन टू सेक्शन 215 7th lib. If there is a violation, it is more than 20%, not violation, then you will be taxed at normal rate. और if the books of accounts are not being audited, अभी क्या हो रहा है, फॉर्म 10 भी आपने फाइल नहीं किया, ऑडिट नहीं करवाया, तो अभी जो अभी इंटीमेशन आ रही है उसमें द होल इनकम इज बीइंग टैक्स्ड, पूरी रिसीट को टैक्स कर रहे हैं.
they have clarified that if you are not getting the books of account audit, your income will be taxed at normal rate, and आपको expenditure जो मिलते हैं वो आपको मिलेंगे. Or if you have not filed the return of income under section 130 you will be taxed in these conditions. And how to compute the taxable income, that is very important. In the recent, as I said, कि अभी क्या कर रहे हैं कि आपने 10B फाइल नहीं किया या कोई वायलेशन होगी तो होल रिसीट आर बीइंग टैक्स्ड. आपकी 3 करोड़ की रिसीट है, सब पे टैक्स आगे भेज रहे हैं. Now they have given the formula how to calculate the taxable income. Of course, receipt minus expenses आपको मिलेगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको नहीं मिलेगा. नॉर्मल बिजनेस में नहीं मिलता आपको. एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी आउट ऑफ द कॉर्पस फंड. एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी आउट ऑफ द बोरोड फंड, क्योंकि बोरोड फंड के एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, आपने एप्लीकेशन में ले रखा है, आपको नहीं मिलेगा. डेप्रिसिएशन और एसेट, अगर आपने पहले उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया था, एप्लीकेशन मान लिया था, तो नहीं मिलेगा. एनी डोनेशन और कंट्रीब्यूशन मेड टू अदर इंस्टीट्यूशन. In section 11, if you are make a donation to another institution or charitable trust, you get the benefit. But if the benefit is withdrawn, then the donation will also not be, you will not get the benefit of donation, you have to pay tax on that. And section 40A(IA) and 40A(3) shall be applied, mutatis mutandis, and no set off and carry forward of previous losses. This is how to compute the income. If these 3 violations are done, but if these violations are done, then you will be taxed at the rate, at a special rate, and a new section 115 BBI has been now on the statute books at the rate of 30%. अब 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर आपने ये वायलेशन की. पहली वायलेशन की नॉर्मल रेट. अनरीजनेबल बेनिफिट, तो अगर आप अनरीजनेबल बेनिफिट दे रहे हैं अब इंटरेस्टेड पार्टीज को, तो 2 इफेक्ट्स आर देयर. 1, you have to pay the tax at 30% under section 115 BBI, and simultaneously a penalty of 100% or 200% will be levied to you. Any deemed income in 11.3, जैसे मैंने बताया कि आपने 11.2 का वैल्यूएशन किया, डीम्ड इनकम हो गया आपको. अभी तक था कि एमएमआर लगेगा, नॉर्मल रेट लगेगा, now it will be taxed at special rate. So in these situations, you have to pay tax on specific on at the rate of 30% under section 115 BBI. Another provision is about the religious trust. Religious trust के लिए कहा है कि अगर आप चाहे religious trust, तो पूरी की पूरी इनकम को एज ए कॉर्पस डोनेशन वो मान सकते हैं. और जब कॉर्पस डोनेशन आप मान लेंगे, तो आप उसको उसी हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा आपको फॉर दैट पर्पस ओनली. तो दिस इज द चेंज द रिलीजियस ट्रस्ट. नाउ इट्स 6:42. वी कैन टेक द क्वेश्चन, सर. I think I have covered the whole scheme as well as the amendments. तो रोहित जी कोई सवाल है तो आप ले लीजिए. वही देख रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन रेलेवेंट है क्या क्या. So one question is, should the trust deed be registered with the local registration office before applying with the Commissioner of Income Tax? Of course, sir. Of course. सर देखिए, जब आप अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो ट्रस्ट डीड कहां से देंगे? रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है ना वो आपसे. The another question is, for a trust which has got new registration provisionally, is it mandatory for it to apply for permanent registration? हाईलाइट हो सकते हैं क्वेश्चंस. Can you highlight these questions, sir, so that I can read? मैं सर एक काम करता हूँ, इनको दोबारा से सेंड करता हूँ तो आपको फ्रेश दिख जाएंगे वो. मैं चैट बॉक्स में जाके देख लूं क्या? हाँ सर, चैट बॉक्स में देख लीजिए आप.
सर अगर आप चैट बॉक्स को मैक्सिमाइज कर लेंगे ना तो इट विल बी मच मोर कन्वीनियंट टू अच्छा अच्छा see the questions. Okay, Sandeep Jain is there. Voice is not audible, sir. Please check your internet connection and Zoom. See Ajay Gupta ji, in case return and annual return in 10B is not filed with due date, benefit of section 12AA available or not? Sir, nahi milega aapko because of the condition in section 134A is that you have to file the return of income within the due date. तो आपको नहीं मिलता है और इसीलिए जो इंटीमेशन आ रही हैं वो सब टैक्स लगा के भेज रहे हैं. VS Venkatesh, please explain section 11(4) and 4A regarding carrying on business. Sir, देखिए in case of 11(4), if the trust is running a business, for example, a trust got the business in donation or by default, then you have to calculate the business income according to the books of accounts maintained by them. And what is 11(4) is when you are doing an activity which is not incidental to your main object, then it will be treated as business income. And that is why in the Finance Act 2022, they have separately mentioned this and they have taxed it at normal rate. And once you are in the business head, all the provision of section 28 to 44C will be applicable to you. AN, if return is filed after due date of return to section 1023C, क्या benefit मिलेगा? For educational and medical institution के लिए सर है 5 crore limit. The question is not complete, sir. But earlier it was not mandatory to file the return of income for 1023C in the due date. You are getting the benefit. In case of trust registered under section 12AA or 12AB, you have to file the return of income within the due date. Otherwise, you are not getting the benefit. Akash Agrawal, sir, as I said, now this Finance Act 22 has made the provision that you have to file the return of income for the trust under section 1023C even on the before the due date. Otherwise, you will not get the benefit. Sandeep Jain, if it is comfortable to you, good self, then please share one performer trust deed drafted by your good self, covering all these aspects. Sandeep ji, I will send to the to Rohit ji, and he will forward it to you, sir. Trust had selected wrong code while re-registration of creditors. What to do in that case? Please guide Mr. Ashwini Jain. Sir, if you have selected the wrong code, either you can go for rectification or you can go for the grievances. And if the registration is being allotted to you with the wrong code, then you can go for an appeal. तो जी मेरे को तो और सवाल नजर नहीं आ रहे. So there were some questions on our live YouTube channel. So because it was going on YouTube as well, so I have posted them. So वो सबसे last में आपको दिख जाएंगे, sir. If you can please answer them. This is Akash Agrawal. Trust नहीं कहाँ पर है? आप बोल दीजिए सर. What are the important clauses to be mandatorily included in the trust deed for obtaining the registration? It's the mandatory clause, as I said, because in trust there is a settler, and the number one clause is there has to be a specific property which is going to be settled. It may be rupee 1, rupee 100, rupee 1000, 1 lakh, or some property. It should be a certain property. A trust cannot be settled without any property.
Please understand. Second is the transfer should be irrevocable transfer. Third, there should not be any benefit to the interested party. And fourth, there has to be a dissolution clause. And the dissolution clause should mention that all the asset and liability on dissolution will go to the trust having the same object. Any other questions, sir? You can have my number. Sir, आप चाहें तो you can give my number to. Okay, sir, sure. From Srinivas. The audience is from South India also. Yes, sir, from South India. That's why some of them were asking. Yeah, that's why they are asking for English, na? Yeah, but I guess there was perfect blend of that, so I thought let it be like it, because there was a mix and match communication. So I guess communication might have been fine. Okay, so sir, you can type my email ID there. If anybody needs any answer, that he can mail me or send me on my WhatsApp number. Okay, so to all the participants, if you have any more questions left, we'll be providing you with the email ID of sir, so that you can directly get in touch with him, and he'll be more than happy to solve all your questions. So sir, should we wind it up now? Anybody wants to raise hand, you can ask. Yes, if you want to raise your hands, I'll allow you to speak, then you can ask. Operate. No hand raises, sir. I cannot see any hand raises. Okay, how can we have access to the mail ID and mobile number of sir? From email ID. Okay. So, you can type my email ID in the chat box. 𝐂𝐚𝐻𝐚𝐿@gmail.com. Okay, sir. Let me type. CA Sunil 𝐂𝐻𝐚𝐿 Garg. 𝐂𝐻𝐚𝐿 Sunil 𝐂𝐴@gmail.com. And my number is. Yes, sir. Yes, right. And my number is 98110 98110 15509. 15509. Okay, so I have messaged the number and email address to each and every one of you. You can try to reach them directly in case of any doubt post the session. Okay, so thank you so much, sir. Thank you so much for making this session so much interactive and enlightening us with this very new as in terms of amendments. This was very kind deliberation. And because of love and support of our professionals, we keep organizing these kind of sessions. And we are soon coming up with another session on bank audits. So to all the participants, if you have missed today's session, you can watch it on our YouTube channel. It will be available there. Don't forget to hit the bell icon to keep yourself updated with all the regular and knowledgeable updates. So please stay connected, keep using Optotax, be safe and healthy, keep hustling. Goodbye and good night. Thank you so much, sir.